Hello everyone, welcome to BYJU'S Exam Prep. I'm Roohindeep Kaur and I'm really sorry for the delay that happened today. There was some technical issue at my end. I'm really sorry for that. So I really hope you guys are fine. And hi Ritik, thank you so much for being so patient with us. Thank you so much and welcome to the session. Um, so in this session, we are going to discuss about IPMAT strategy. How to crack IPMAT in 2 months. If you're aiming for IIM Indore as well as IIM Rohtak, okay, both of them together. How can you prepare for that? Do these things have something in common that can help you in some manner? So we're going to have a discussion on that, and I'm going to take few of your doubts as well towards the end of the session. So first of all, first things first, let's discuss about the exam pattern. So the recent exam pattern of IIM Indore clearly tells you that you will have again the same three sessions: quantitative aptitude of short answer type questions and quantitative aptitude of multiple choice type questions. You're also going to have verbal ability questions as well. Each question is going to carry 4 marks. So the multiple choice questions of verbal ability and quantitative ability have negative marking. However, if I talk about short answer type questions of quantitative ability, there is no negative marking. So that is your IPMAT Indoors exam pattern. If we talk about the selection criteria, hi Neeti, good afternoon, bacha. A very good afternoon. So if I talk about the selection criteria, if you're going to appear for IPMAT, the first and the foremost step is to clear the aptitude test, to clear the entrance test, and based on this entrance test, you are given ATS, that is your aptitude test score. They have a very specific formula of creating ATS. So you have three sections. Your section one is QA, which is further of two sections: short answer and multiple choice questions. And then you have verbal ability, which has multiple choice questions. So each and every section, the number of marks that you obtain in these sections, they are multiplied using a specific formula, and from that you get your ATS, and that is 65% of the total weightage directly in the email that okay, congratulations, this is your ATS, you have cleared the cutoff. Okay, and if you cannot, they tell you that we're really sorry, you could not clear the cutoff, and that is it. They do not very clearly tell you which section you got what mark, what was the cutoff. So that is the main you know area of IPMAT Indore, right? It has a substantial weightage for personal interview. So once you clear your entrance test, you go to your personal interview. That is 35% of the total score. So there is no written ability test this year, and that is one of I would say it is good for a lot many students because many students were not confident in writing down an essay. Okay. However, 65% and 35% is the total weightage. Now, if I talk about IPMAT IIM Rohtak, so we did talk about Indore, now we're talking about Rohtak. So if I talk about IIM Rohtak, over here you'll understand that there are 40 questions, three sections over here only, right? यहाँ पे भी there are three sections. Quantitative is there, verbal is there, but instead of short answer type questions, you get logical reasoning. Okay? So you get 40 minutes for each and every section. It is a timed frame test. For each section, you are given 40 minutes, right? And if I talk about Indore as well, yes, that is also a time frame test. Hi Tripti, hello. So time frame dono mein hai. Each and every section is going to give you, a definite time frame. So you have to complete giving your answers within that time frame. If I talk about negative marking, yes, आपके IIM रोहतक के अंदर there is negative marking. So each section will have 40 questions. Their duration of test will be 120 minutes, 40 minutes each for each sections, and four marks for each accurate question, and there is negative marking.
So if I talk about the substantial weightage, you get 45% weightage given to your ATS, ठीक है, your aptitude test score, and then 15% weightage to your personal interview. If you clear the first stage, then you move to your personal interview. And then 40% weightage is given to your past academics. Okay, so your past academics, they are going to count. So a lot many students, they tie up over here, right? However, the tiebreaker becomes their past academics. So this is the weightage process of IIM Rohtak. Now both the exams are about 2 months away. About, okay, I'm not counting them as complete 2 months, because the last week and and those days, they are pretty much like, okay, I'm just going to repeat whatever I've learned today. So you need to be mentally prepared in the last week. You need to calm down. You need to focus towards your goal, right? So I'm not going to say it's entire 2 months. We're going to say it's 1 month, 3 weeks, about that. So no further delay in starting your preparation. I am, you know, very frustrated when I say start your preparation for IPMAT. No sugarcoating, nothing. If you guys assume that today you're going to start, I'm assuming you're going to start revising. Starting your preparation today for IPMAT Indore, I'm not going to lie to you, you cannot make it, right? Unless until you are working hard enough. Okay, I have these many, topics, and I'm solving questions from this topic again, and then I'm revising. So all these things matter: revision, revision, revision. However, I don't think the students who are going to be your competition in IIM Indore, have would have started right now. They must have started, about in December or November already. Okay? Even if they started in the month of February, they still have a better chance. But if you're going to start now, I wouldn't lie to you. You can have a chance at IIM Rohtak. Now, Indore, say Rohtak is different in the level. However, I'm not going to sugarcoat. Indore is going to be difficult. If you're revising, you're starting your revision right now, then yes, then absolutely you can make it. इंदौर में नेगेटिव मार्किंग है, यस तृप्ति, बिल्कुल है। इंदौर के 2 सेक्शंस में नेगेटिव मार्किंग है जो मल्टीपल चॉइस है, लेकिन जो आपका शॉर्ट आंसर टाइप है वहां पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, राइट? सो you are not going to waste any amount of time. So quickly in the comment section, let me know how much you guys have completed. Have you completed your logical reasoning? If you have not completed your logical reasoning, what are the topics that you are still to try? Then have you started preparing for QA? I'm assuming that by this time you have done and dusted with your quantitative aptitude ka basic study. Now yes, in your revision factor, if you're doing revision, whatever is remaining, do let me know in the comment section, because right now LR and V, ठीक है? So these things, the basics should be done. I'm not saying कि okay तुम्हारा 100% syllabus हो जाना चाहिए, but at least if you're done with 50% of the syllabus, that means you're good to go. ठीक है? That means you're good to go. So if you haven't started yet, ठीक है, you're assuming that okay नहीं मैं 100% देने वाला हूँ, you're pretty much motivated to clear this test, right? Let's see what you can do for this. So IPMAT Indore is not as IPMAT Rohtak is not as difficult as IPMAT Indore. So 2 months of the preparation is optimal. IPMAT Indore के relative में Rohtak का optimal है, आप कर सकते हो. If you have completed logical reasoning 80%, and if you have completed quantitative aptitude about 40%, yes, it is still possible. Given the fact that don't just keep on solving logical reasoning questions, keep on trying to learn the remaining quantitative aptitude principles and concepts, and just please do not get stuck on one subject. एक सब्जेक्ट आपको कभी भी कंप्लीट सोल्यूशन नहीं देने वाला है. मैम वर्बल में वोकैबुलरी कैसे प्रिपेयर करें? अरे अल्पा मैम एंड विनोद सर कितना हेल्प करते हैं यार तुम लोग का. व्हाई आर यू गाइज नॉट गोइंग एंड वॉचिंग द लेक्चर्स? ठीक है, तो मैंने बहुत बारी बताया है कि स्टार्ट विद मिनिमम 5 वर्ड्स अ डे.
आप कोई वेबसाइट फॉलो कर सकते हो, बायजूस के वीडियोस फॉलो कर सकते हो, ठीक है, बायजूस एग्जाम प्रेप पे वीडियोस फॉलो कर सकते हो। व्हाट यू गाइस कैन डू, यू कैन फॉलो पर्टिकुलर बुक, वर्ड पर मेड इजी फॉलो कर सकते हो, वहां से 5 वर्ड्स डेली कर सकते हो। 2 मंथ्स में 5 वर्ड्स, इट इज 300 के आसपास वर्ड्स हो जाएंगे बाय द टाइम आपका एग्जाम आता है। इट्स नॉट लेस, सो गुड क्वालिटी वर्ड्स। अब ये नहीं कि तुम उठा के बोल रहे हो कि इजी इजी वर्ड्स को तुम देख रहे हो, तो मुश्किल वाले वर्ड्स, गुड लेवल ऑफ वर्ड्स कहाँ से मिलेंगे? वर्ड पर मेड इजी के लास्ट में देख सकते हो, आप वीडियोस चेक कर सकते हो। You can come and solve vocabulary based quizzes on BYJU'S Exam Prep. That is very helpful. So make sure you're doing all these things, right? Okay. Now, if I talk about verbal ability, right? Synonyms, antonyms, one word substitution, idioms, ठीक है, ये सारे के सारे आपके vocabulary के ऊपर based हैं. So vocabulary start करो. Okay. Nilesh has a question. Nilesh says, what should be a good score out of 400 for IPMAT Indore? Um, Honestly, maximum that you can achieve, Nilesh, is good. But if I talk about, out of 400, if I talk about verbal, ठीक है, we're going to get around 40 questions. So you are expected to at least go ahead and get 25 to 28 accurate. Now I'm saying least accurate. अगर आपने इतना ही अटेम्प्ट करा इन 40 मिनट्स, ठीक है, यू कैन क्लियरली अटेम्प्ट मोर, बिकॉज इन आईपीमैट इंदौर not only you have sectional limit, but also you have to clear each and every sections cut off. आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बीए का अलग से कट ऑफ क्लियर करना पड़ेगा, मैथ्स का अलग से कट ऑफ क्लियर करना पड़ेगा, शॉर्ट आंसर का अलग से कट ऑफ क्लियर करना पड़ेगा. सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट 40 क्वेश्चंस, so around 25 to 28 minimum accurate, ठीक है. Now it depends a lot on questions being asked. सबसे पहले तो एग्जाम किस तरह का आता है, ठीक है. बट अगर मैं बात करूं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, तो honestly, if you see the past year question papers of IPMAT Indore, you will realize that in the past year, IPM is more focused on testing your knowledge rather than testing your speed and accuracy. So there are two things. If I just have to put this, Indore versus Rohtak. So Indore wants your accuracy and speed, ठीक है. Rohtak wants your accuracy and speed. Indore wants your accuracy and knowledge. ठीक है. So there are two different things. They are not asking you to go ahead and solve each and every question. However, Rohtak mein it is going to depend a lot that if you can increase your speed and accuracy, that is going to help you with your rank. ठीक है. So there are two different things. If I talk about IPMAT Indore, in each and every section, minimum 50% accuracy is required. So I would say a safe score would be somewhere around 200 minimum and anything above that. ठीक है, but it is a very high level score. मैं बोल रही हूँ कि अपने आप को इतने के लिए अचीव करो, ठीक है, इतने के लिए अपने आप को अचीवमेंट के लिए प्रिपेयर करो, ठीक है. यू आर गोइंग टू गेट बेटर एंड इट डिपेंड्स अ लॉट ऑन द लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर बीइंग आस्क्ड, ठीक है. तो अभी के लिए आई वुड से 50% इज नॉट लेस अगर आप यहाँ के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि एक चीज पता है इंदौर के बारे में, दैट द एग्जाम इन इंदौर इज नॉट जस्ट डिफिकल्ट बट ऑल्सो इट इज लेंदी. So the questions are on the lengthier side, right? So that should do about it. How can I improve my communication skills for PI round? Ritik, I would say that your entire focus right now should be on the ATS. You will get time, ठीक है. अभी टाइम नहीं है बेटा कम्युनिकेशन स्किल्स को, लाइक अभी आपके पास टाइम नहीं है. ऑनेस्ट सी बात बोलूंगी, कम्युनिकेशन स्किल्स का ऐसा है कि आपको थ्रू आउट द ईयर कंटिन्यू करना चाहिए था, ठीक है. अगर आपने अभी नहीं करा है, एज ऑफ नाउ प्लीज फोकस ऑन योर एटीएस. जब आपने एटीएस दे दिया उसके बाद रुको मत, डोंट स्टॉप, ठीक है. जब आपका टेस्ट हो गया, डोंट स्टॉप. वी आर गोइंग टू डू सेशंस फॉर हाउ टू प्रिपेयर फॉर योर इंटरव्यू. वी आर गोइंग टू डू दैट, बट अभी के लिए सिर्फ एटीएस पे फोकस करो प्लीज. पीआई राउंड ऑनलाइन होंगे, दैट डिपेंड्स तृप्ति, एज ऑफ नाउ लग रहा है, बट दैट डिपेंड्स.
Krish, Alpa ma'am can and Vinod Shankaran sir can help you with that. So make sure you're going and checking out their videos and asking them. I think उनका live session, आप देख सकते हो around 12:30 Alpa ma'am every day she comes live. So आप उनसे प्लीज चेक करो. अगर आप वोकैबलरी के लिए बोल रहे हो तो बाइबल, वर्ड पावर मेड इजी. अगर आप ग्रामर के लिए बोल रहे हो तो रेन एंड मार्टिन. ठीक है. अगर मैं और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में बात करूं तो आप बायजूस एग्जाम प्रेप पे जाके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व कर सकते हो. हाउएवर एक बेस्ट बुक कौन सी होगी तो आपको वर्बल का टीचर बता सकता है. दीज आर द फ्यू टिप्स फ्रॉम माय साइड. सो synonym antonyms based on vocabulary, your reading comprehension, your para jumble, your para completion, ठीक है, para summary, spotting errors. तो आपका grammar important है, आपका reading skills and comprehension important है, आपका vocabulary important है. अगर इसमें से दो चीजें भी आपने क्या कर ली, होन आउट कर ली, मतलब आपको पता है कि आपका ग्रामर बहुत स्ट्रांग है, आपको पता है कि आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत स्ट्रांग है, आप अचीव कर पाओगे 50% आराम से स्कोर. ठीक है. लेकिन व्हाट विल हेल्प यू इज कि अगर आप वोकैबुलरी भी थोड़ा सा इंप्रूव कर लेते हो, ठीक है, तो दैट विल बी लाइक एक्स्ट्रा स्वीटनेस इन योर स्कोर. सो मेक श्योर यू आर डूइंग दैट एज वेल. बट दो चीजों को अपना फोटे जरूर बनाओ. दैट इज माई टिप. ठीक है. तो वोकैबुलरी आप हेल्प ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल के कंटेंट की और वर्ड पावर मेड इजी जैसे बुक्स की. ब्रश अप योर ग्रामर नॉलेज, do a lot of reading to get better at reading comprehension. I would say do a lot of practice of reading comprehension as well. Maintain a notebook for noting down important words and idioms and vocabulary. के लिए एक इस तरह से लिस्ट बनाओ कि ओके इफ यू आर राइटिंग डाउन अ वर्ड उसके सामने उसके एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स भी लिख रहे हो, एंड एट द सेम टाइम यू आर राइटिंग डाउन द यूजेज ऑफ द वर्ड्स इन अ सेंटेंस. दैट हेल्प्स यू रिमेंबर इन अ वेरी बिग वे. Take lots and lots of sectional tests, that is combination of grammar, vocabulary, reading comprehension, mixture of question tests. कहाँ मिलेंगे? BYJU'S Exam Prep, right? Consider purchasing a magazine as well to brush up your reading skills. Now magazine अगर आप नहीं भी लेना चाहते हो, what you can do is you would be reading the newspapers. आपके घर पे न्यूज़पेपर्स आते होंगे, आप ऑनलाइन पढ़ते होगे, तो वहां से भी आप जो है इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो है वो ढूंढ सकते हो. वहां पे भी आप क्या कर सकते हो, आर्टिकल्स पढ़ सकते हो. सो डू वन थिंग. अगर आप कुछ नहीं करना चाहते, एक सिंपल ट्रिक मैं बताती हूँ विच इज वेरी इजी टू फॉलो. दैट इज गो ऑनलाइन. ठीक है. आर्टिकल्स ढूंढो. ठीक है. एडिटोरियल पेज ऑफ ईच एंड एवरी, लाइक इंडियन एक्सप्रेस का, टाइम्स ऑफ इंडिया का, अच्छे न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पेज पढ़ो. So that helps a lot. Keep a track of changing exam pattern. Make sure you are doing that. Why? Because अगर exam pattern change हो गया और तुम अभी भी पुराने pattern की तरफ से काम कर रहे हो, that is not going to help you. If I talk about quantitative aptitude, the level of questions is expected to be much higher than the other journal. Like अगर आप CUET के लिए prepare कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैथ्स जो है वो हायर लेवल का आने वाला है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हायर लेवल का आने वाला है. आपको डेटा इंटरप्रिटेशन आएगा, बार चार्ट्स, टाइम स्पीड डिस्टेंस बेस्ड डेटा इंटरप्रिटेशन क्वेश्चन, पाई चार्ट्स, हिस्टोग्राम्स, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. ऑल दीज क्वेश्चंस आर एक्सपेक्टेड इन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड. तो अगर आपने अभी भी शुरू नहीं करा है, इफ यू आर लाइक समवन हु स्टिल वेटिंग, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन, स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद अरिथमेटिक. ठीक है. कीप ऑन सॉल्विंग द क्वेश्चन विच आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है. अरिथमेटिक क्वेश्चंस या बेसिक क्वेश्चंस, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस. ठीक है. कैलकुलेटर्स को कम से कम यूज करो. एज यू आर डन वर्किंग ऑन दीज स्किल्स, थोड़े से हायर लेवल क्वेश्चंस पे चले जाओ. Algebra, permutation, combination, stuff like that. Tripti, I already answered that. अब थोड़ा सा पीछे जाओगे और already answered that. For quantitative aptitude, this is very important. मैम मेरे को तो उस बच्चे ने बोला आई नीड टू डू एनसीईआरटी. मैम मुझे तो उसने बोला अरुण शर्मा कर लो. मैम मुझे तो ये बोला गया कि अरे तुम कैट के क्वेश्चंस क्यों नहीं कर रहे हो. डोंट डू दैट. मेक श्योर यू आर स्टिकिंग टू द रेलिवेंट टॉपिक्स एंड रेलिवेंट सेट ऑफ क्वेश्चंस. बहुत ज्यादा हाई लेवल भी करने की कोशिश मत करो. ठीक है. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखो, गुड मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करो, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को लिस्ट डाउन करो. अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जो डिफिकल्ट लग रहा है, उसके स्टेप डाउन करो. अच्छा इस तरह से पहले मुझे ये फाइंड करना है, आफ्टरवर्ड्स आई हैव टू फाइंड दिस, आफ्टरवर्ड्स आई हैव टू फाइंड दिस, एंड ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चंस लाइक दैट. ठीक है. The level of question is expected to be slightly higher than other journal BB entrance exam of logical reasoning.
हायर एज इन यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस डेलिबरेटली लेंदी होते हैं. यू आर गोइंग टू गेट 40 क्वेश्चंस ऑफ लॉजिकल रीजनिंग, लेकिन यू विल सी के कुछ 10-12 क्वेश्चन ना लेंदी होंगे. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ट्रैप में फंसते हैं, क्वेश्चंस जैसे शेड्यूलिंग बेस्ड प्रॉब्लम, रैंकिंग बेस्ड प्रॉब्लम, सीटिंग अरेंजमेंट बेस्ड प्रॉब्लम, पजल्स की प्रॉब्लम, ये थोड़े से लेंदियर साइड पे हो सकते हैं. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं चलता है कि वो टाइम ट्रैप में फंस रहे हैं. यू ओनली हैव 40 minutes फॉर 40 क्वेश्चंस. सो टाइम ट्रैप से बचना है. अपने आप को एम दो कि मुझे फर्स्ट 20 minutes के अंदर कम से कम 18 to 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं ऑफ इजी लेवल, है ना. तो व्हेन यू आर डूइंग दैट, यू आर अचीविंग समथिंग जो आसानी से हो जाएगा. अब बचे हुए 20 मिनट में अगर तुम मुश्किल वाले क्वेश्चंस भी करोगे, तो वो क्वेश्चंस उठाओ जो तुम्हें आते हैं, ठीक है, और ज्यादा टाइम नहीं लेंगे. एंड देन लास्ट में अगर तुम अटेम्प्ट कर भी पाए कोई ऐसा क्वेश्चन जो लेंदी है और कंप्लीट हो गया, दैट विल एक्ट एज बोनस. तो योर एम शुड बी गोइंग अराउंड 28 to 32 क्वेश्चंस. ये तब है कि जब आपका लेवल जो है वो मॉडरेट आया है. अगर थोड़ा सा डिफिकल्ट आता है तो इसको होन डाउन कर लो, 26 to 30 कर लो, ठीक है, तो उसको थोड़ा सा कम कर लो. सो फॉर लॉजिकल रीजनिंग मेक श्योर यू आर स्टार्टिंग ऑफ विद डायरेक्शंस कोडिंग. आई एम श्योर यू गाइस आर डन विद दिस, ठीक है. माइंड मैप्स फॉर स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चंस. कई बार तुम कोई कोई क्वेश्चन ऐसा देखते हो, जैसे मैं भी तुम लोग को स्पेशल एक क्वेश्चन देती हूँ कि यार ये एग्जाम में आया था, इसको ट्राई करना. तो वो पजल, वो क्वेश्चन, वो सीटिंग अरेंजमेंट वो डिफरेंट तरीके का होता है, वो किस तरह से करना है, ठीक है, दैट बिकम्स वेरी हेल्पफुल. अगर आप उसका माइंड मैप मतलब जैसे मैंने क्यूए में बोला था, स्टेप वाइज सोल्यूशन नोट करो, ठीक है, क्योंकि मैम ने पहले ये सॉल्व करा था, फिर उन्होंने मैम ने एकदम से टॉप टू बॉटम सॉल्व नहीं करा, मैम ने बीच बीच में से स्टेटमेंट्स को सर्च करा जो लिंक हो रही थी. तो व्हाट इज दैट, दैट इज क्रिएटिंग माइंड मैप. कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आया, तो अगर मैं रेगुलर तरीके से सॉल्व करूंगा तो ज्यादा टाइम लगेगा. माइंड मैप इज लर्निंग द स्पेशल मेथड्स ऑफ सॉल्विंग स्पेशल क्वेश्चंस, ठीक है, फाइन. As you move ahead of easy topics, focus on learning critical reasoning. ठीक है, do tougher and more tougher questions throughout your preparation. Make sure you're doing that, right? Analyze your past year questions to be well versed. Past year question papers, mock test. Make sure you're doing that. ज्यादा से ज्यादा टाइम फ्रेम के अंदर प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस को, ठीक है. विजुअल रीजनिंग, पजल, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आते हैं, सो इनको प्रैक्टिस जरूर करो, ठीक है. इफ यू गाइज आर प्रिपेयरिंग फॉर IPMAT Rohtak and CUET, so we already are giving you a crash course. You can come and join this crash course or take a free trial today. Also, if you guys are yet to download BYJU'S Exam Prep app, make sure you do it soon. And anyone who's thinking right now कि कितना safe score है, my answer to you would be do not think about the safe score as of now. ये मत करो. तुम अपने आप को क्या कर रहे हो, स्ट्रेस आउट कर रहे हो. डोंट डू दैट. तुमने मॉक दिया, ठीक है, तुमने वर्बल एबिलिटी में आउट ऑफ 40 क्वेश्चंस यू कुड अटेम्प्ट 30 क्वेश्चंस, वेरी गुड, ठीक है. क्यूए का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आप कितने कर पाए, आप अराउंड 15 कर पाए, ठीक है. अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए कि नेक्स्ट मॉक में मुझे ये 15 to 17 करना है, ठीक है. क्यूए शॉर्ट आंसर टाइप में मैम मैं तो 3 ही कर पाया, देर इज नो नेगेटिव मार्किंग, देर इज नो नेगेटिव मार्किंग. अगर आप 3 ही कर पाए, तो पहले तो बाकी के क्वेश्चंस को ब्लैंक मत छोड़ो, ठीक है. एंड दिस अदर थिंग इज कि अगर आप 3 कर पाए तो नेक्स्ट टाइम इसको इंप्रूव करो. अब मैं तुम्हें बोलूंगी कि 300 इज अ गुड स्कोर, और तुम स्ट्रेस ले जाओगे अगर तुम्हारे 150 आ रहे हैं, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा. फायदा ये है कि अगर मेरा स्कोर 100 आ रहा है, मैं नेक्स्ट टाइम इसको 120 कैसे करूं, और जब तुम 120 पे स्टेप अप कर गए हो, 120 से 140 कैसे करूं. यू कीप ऑन मूविंग लाइक दैट. 5-5 क्वेश्चन इंक्रीज करते जाओ, इसी तरह से होगा, ठीक है. सेफ स्कोर, सेफ स्कोर, सेफ स्कोर, कभी भी कोई भी स्कोर सेफ नहीं हो सकता है. अगर कोई लेटर से 10 बच्चे ऐसे आ गए, उनको बहुत अच्छे से आते हैं क्वेश्चंस, या फिर उन्होंने कुछ ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करे थे जो इंदौर के अंदर आ गए या रोहतक के अंदर आ गए, जिन्होंने पहले ही सॉल्व करे थे, वो तुमसे आराम से 15-20 क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व कर गए. इट इज गोइंग टू बी प्रीटी मच हेल्पफुल टू देम रेदर देन हेल्पफुल बीइंग टू यू, ठीक है, ठीक है. आप लोगों को
ये चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी कि लेवल ऑफ द एग्जाम के ऊपर भी आपका स्कोर डिपेंड करता है। तो आज तुम्हारा ध्यान इस चीज पे नहीं होना चाहिए कि सेफ स्कोर क्या है, आज तुम्हारा ध्यान इस चीज पे होना चाहिए कि अगर मैं 10 क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा हूँ 20 मिनट में, मैं 20 मिनट में 12 या 13 क्वेश्चन कैसे करूं। तो तुम 2 क्वेश्चन इंक्रीज कर गए, तुम सीधा 8 स्कोर ऊपर जा रहे हो। ठीक है, तुम नेक्स्ट डे जब तुम दोबारा से प्रिपेयर कर रहे हो, क्या तुम उनको 14 कर सकते हो, क्या तुम उनको 15 कर सकते हो। मेरे 300 कह देने से, मेरे 200 कह देने से, मेरे 100 कह देने से कुछ चेंज नहीं होगा। ठीक है, चेंज तब होगा जब तुम सेल्फ इंप्रूवमेंट दिखा रहे हो। ठीक है, I really hope this session today was helpful to you guys, and I really hope you guys got an insight of what is important. So I'm going to meet you soon. Till then, please take care of yourself. If you have any queries, you can always contact us on the numbers that are given below. You can join our Telegram group, right? Also, if you wish, you can write down your comments and your queries in the chat section. And if you like this session, do hit that like button. And we're going to meet soon again. Till then, please take care of yourself. All the best, everyone. Take care.